giraffe represents a large hearted person. किसी ने पूछा what is a giraffe? Giraffe is a symbol of a person who has a large heart and who can be compassionate under difficult circumstances. So that is why it is a symbol in non-violent communication. To be a giraffe is a person who can practice HC. And jackal is a person who has not gone to the HC school and who is speaking his needs and feelings in code. And वो code क्या है? हमारी पूर्वाग्रह, धारणाएं, opinions और judgments. ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो जरूर हाथ खड़ा करें. आज की एक्सरसाइज में हम एक इंटरैक्शन रखेंगे जहां पर मैं आपके इनपुट्स लेकर सभी के लिए उस कॉन्सेप्ट को दोहराऊंगी या हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को भी लेकर बात कर सकते हैं. तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप सभी अपने सर्किट ब्रेकर्स के बारे में अवेयर हैं? आर यू अवेयर ऑफ योर सर्किट ब्रेकर्स नाउ? Yes. Yes. Okay. Yes. तो ओके वंडरफुल. तो जब आप सर्किट ब्रेकर्स यूज करते हैं तो आपको एक चेक आ जाता है कि मैं सर्किट ब्रेकर यूज कर रहा हूँ और आई एम यूजिंग सर्किट ब्रेकर. Yes, yes. So you are getting that check. All right. Wonderful. So कोई बताना चाहेगा क्या क्या सर्किट ब्रेकर्स हैं? एक रिविजन हो जाए. सिस्टर अदिति, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप म्यूट पर हैं. Yeah. Actually not. I'm just want to what is a circuit breaker. I Oh, do not lovely. understand. Okay. ज्योत्सना ने बोला है कि she does not know what is circuit breakers. All right. सर्किट ब्रेकर ऐसे शब्द या ऐसी भाषा है जो कि हमारे कनेक्शन को दूसरे के साथ तोड़ सकती है. जब हम वार्तालाप कर रहे हैं, when we are in a conversation, circuit breakers can break the connection. So will anybody like to please share what is a circuit breaker with an example? Anybody? I invite you. Instant fixing and giving advice. Can you please raise your hand before speaking? It will be very thoughtful for you, for all of us to carry on nicely. Yes, brother. Brother SP Singh, can you give an example of circuit breaker? Thank you, sister. अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि ये मैपिंग क्या है, आप उन्हें एक बार बता रही थी, फिर दूसरी बार भाई साहब ने बताया, तीसरी बार बताया. आई फील इट इज ब्रदर SP सिंह, इस समय हम सर्किट ब्रेकर्स के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप कुछ इनपुट देना चाहें तो उसके बारे में दीजिए. यही तो इनपुट हमें मिला, यही हमें इनपुट मिला कि हमारी जो वार्ता चल रही थी उसमें सर्किट ब्रेकिंग आ गई. बस दैट्स, यही मैं बताना चाहता. थैंक यू. सो आप कह रहे हैं जो हम वार्तालाप कर रहे थे, जब कुछ दूसरा टॉपिक चालू हो गया तो सर्किट ब्रेकर हो गया. सो जिसने ये पूछा है वो उनका नाम मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो आई होप उनको ये पता चले कि जब हम वार्तालाप के बीच में कुछ और चालू कर देते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है. थैंक यू ब्रदर SP से. सिस्टर भावना, आप कुछ बोलेंगी? यस, नमस्ते सिस्टर. आई एम भावना शर्मा, दिल्ली सेंटर से. मुझे तो समझ आया सर्किट ब्रेकर का, जैसे कि मान लीजिए हम कोई रिलेशन में भी मान लीजिए किसी से बात करते हैं और कोई हमारे अगेंस्ट कोई बोलता है तो उसमें हम सर्किट ब्रेक आ जाता है, मतलब हम वहां पर रुक जाते हैं बात करने के लिए. ओके. अगर आपको कोई कट करता है बात करते वक्त तो एक सर्किट ब्रेक होता है. थैंक यू सिस्टर भावना. मैं बहुत सारे यहाँ पर वो देख रही हूँ, interruptions, judgments, advising, telling your own stories, premeditated thoughts, thinking that I know the best. अगर इस एनर्जी से वार्तालाप होती है तो ये सब हमारे सर्किट को ब्रेक करते हैं.
मैं आप सबको एक याद दिला दूं कि हार्टफुल कम्युनिकेशन का इंटेंशन क्या है. The intention of heartful communication is to create and sustain a compassionate and respectful quality of connection that everybody's needs and values can be taken into account. हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ. हार्टफुल कम्युनिकेशन का मेन एम ये है कि हम सभी के नीड्स और फीलिंग्स को इंक्लूड करें और एक कंपैशनेट तरीके से, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से हमारा कॉन्वर्सेशन हो. सो सबसे इंपॉर्टेंट हार्टफुल कम्युनिकेशन में क्या है? द इंटेंशन ऑफ डैश. कोई बता सकता है? Connecting. Okay. So thank you, brother Rama. The heartful intention, the heartful communication intention, the first thing is to have a connection. मेरा इंटेंशन है कि मैं कनेक्ट करूं, उसके बाद दूसरी चीजें चालू होती हैं. राइट? आप 4 टूल्स ऑफ कनेक्शन बता सकते हैं? 4 टूल्स ऑफ कनेक्शन क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो हमने अपने सेशंस में सीखा. ऑब्जर्वेशन. ओके, ऑब्जर्वेशन. यस. Feelings, wonderful. Need. Needs, yes, and request. Wonderful. Wonderful. So ये जो 4 टूल्स हैं, इनको हम टूल्स ऑफ कनेक्शन बोलते हैं, और इनको हम यूज करके अपनी बात को कह सकते हैं, और we can receive somebody. We can express ourselves in OFNR, or we can receive somebody listening to what? यहाँ पर किसी ने अभी लिखा, अंजुधर ने लिखा listening to what? Listening to feelings and needs. जब हम किसी के फीलिंग और नीड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, कनेक्शन हो पाएगा? Yes. हो पाएगा. Yes. आज हम आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो ब्रदर मुत्तू ने भी डाला है, that can you please raise your hands before speaking. This is a common request to everybody for a smooth functioning. My need is smooth functioning of today's session. So thank you, brother Rama. If you can put your hand down, since we heard your input. And brother CP Tripathi, you want to say something? ये नहीं सिस्टर, वो चल रहा था सर्किट ब्रेकिंग का, तो उसके लिए मैं हैंड रेज किया था. ओके. सो सर्किट ब्रेकर में हमने पढ़ा कि टेलिंग योर ओन स्टोरी, जब हम अपनी खुद की गाथा बताने लगते हैं दूसरे को सुनते सुनते, तो क्या होता है, किसके ऊपर फोकस आ जाता है? स्पीकर के से ध्यान हटके इट कम्स ऑन द लिसनर. व्हेन द लिसनर इज टेलिंग हिज ओन स्टोरी, so there is a break of circuit, right? कोई मेरे साथ डेमो करना चाहेगा? Anybody wants to do a demo of circuit breaker with me? हेलो सिस्टर. Yes, brother Kishore. मैं वो सर्किट ब्रेकर के बारे में बताना चाहता हूँ. बोलिए. Expectation is the main circuit breaking from my side. Expectation is also a circuit. I like to without my knowing, I impose my pace to another person. मैं मेरा गति को दूसरे पे थोप देना चाहता हूँ without my knowing. Oh, thank you so much. Okay. फिर जब रियलाइज करता हूँ, फिर कनेक्ट करने के लिए कोशिश करता हूँ with feelings, and then it is going easy way. Oh, lovely. Thank you for that sharing. I hear that you are becoming aware of your expectations that you have. Yes, from the other person. Main thing is my fault. Okay. That I expect. And it is unknowingly, right? Unknowingly. So I think हम लोगों में से हाथ खड़ा करें, कितने unknowingly expect करते हैं दूसरों से चीजें. मैं करती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ. It is very unknowingly that this is happening, and this is wonderful कि आप उसको पहचान पा रहे हैं, और because of that there can be a change.
सो जब हम किसी से बात करते हैं, आपको ये भी लगता है कि हमारे शब्दों में बहुत ताकत है बात करते वक्त? Yes. और अगर हमारे शब्द हम चूज ठीक से न करें तो दूसरे को अलग सुनाई देता है, हमारा मैसेज कहीं ना कहीं वीक हो जाता है. आवर मैसेज इज डिसॉल्विंग बिकॉज वी आर नॉट चूजिंग द वर्ड्स केयरफुली. डू यू थिंक सो? डू यू थिंक सो? सी, क्या मैं अवेयर हूं कि मैं डिसकनेक्टिंग शब्दों का तो यूज नहीं कर रही? क्या मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर रही? आपको हार्टफुल कम्युनिकेशन में जब आपने फीलिंग्स के बारे में जाना, तो क्या आप अभी भी अवेयर हो जाते हैं जब आप ये कहते हैं कि मैं इतना खराब महसूस कर रही हूँ क्योंकि तुमने आज देरी कर दी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हम लेट हो गए? क्या ऐसी सेंटेंसेस पे हमारा ध्यान जाता है? यस? मैं इस वक्त थोड़ी दुविधा में हूं क्योंकि मैं सभी को देख नहीं पा रही. आई एम नॉट एबल टू सी एवरीबडी बिकॉज आवर ग्रुप इज very large and I'm alone today as presenting. So if I'm not able to connect to you because of this large number, please feel free to write on the message, and I request Prem Bhai to read the messages in case I'm missing some of them. Okay, So sister. we like to include the learnings as much as we can. Prem Bhai, can you please keep a note on the chat Sure, and sure. I will do bring that. it to our notice? Thank you. So जो बोल चुके हैं वो अपना हाथ नीचे कर लें, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं, हम चाहेंगे कि बाकी लोग भी अपना इनपुट दे पाए. सो थैंक यू भावना दीदी, आप अपना हाथ नीचे कर सकती हैं. एंड थैंक यू सीबी भैया, आप भी अपना हाथ नीचे कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक नहीं बोला मैं उनको इनवाइट करूंगी. सो एलिनेटिंग लैंग्वेज में आपके साथ दोहरा दूं, इसमें जो शब्द आते हैं वो होंगे जजमेंट्स के, ब्लेम के, एक्सपेक्टेशन के, हाई इंसिस्टेंस एंड डिमांड्स के. कभी कभी डराना धमकाना भी आ जाता है इसमें. अगर तुमने ये काम नहीं किया तो आज तुम खेलने नहीं जाओगे. इस तरह की जो लैंग्वेज है उसको हम थ्रेट बोलते हैं. दिस इज यूजिंग थ्रेट, चाहे हम बच्चों के साथ करें, चाहे हम अपने कलीग्स के साथ ऑफिस में करें. दूसरा है किसी को भी ये बोलना कि यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें आज की मीटिंग में आना ही पड़ेगा. अगर हम इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं तो ये भी हार्टफुल कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को चॉइस नहीं दे रहे. वी आर नॉट गिविंग अ चॉइस टू द अदर पर्सन. यू मस्ट कम टू द मीटिंग टुडे. डू यू थिंक इट इज हार्टफुल कम्युनिकेशन? No, it is not. And very habitually, very unknowingly, we are doing that. So I also feel that अगर हम अपनी साधना के बारे में बोलते हैं कि I should meditate every day, और एक बोलते हैं I would love to meditate every day, क्या दोनों में अंतर सुनाई दे रहा है? इन दोनों वर्ड्स में क्या आपको अंतर सुनाई दे रहा है? डू यू सी द डिफरेंस हैपनिंग? Yes, yes. I should meditate every day. Instead of saying that, if I say I would love to meditate every day, I'm just bringing your awareness to the words that we say to ourselves and we say to others. So when we are using should, must, करना ही पड़ेगा, आप तुरंत अलर्ट हो जाइए कि ये हार्टफुल कम्युनिकेशन में
हम अपने आप को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट स्पीकिंग हार्टफुल कम्युनिकेशन। सो यस विकास भाई, आप के साथ पूछेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। यू आर ऑन म्यूट ब्रदर विकास, आप म्यूट पर हैं। गुड इवनिंग सिस्टर। गुड इवनिंग। तो मैं कहना चाह रहा था, मैं जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जॉब करता हूँ, और मेरे साथ काफी बंदे मतलब कनेक्टेड हैं जो मेरे अंडर में ओके हैं। ओके तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे पास भी टारगेट का प्रेशर तो रहता ही है। जी उस केस में हम लोग कोशिश करते हैं रिक्वेस्ट मोड पे, लेकिन जब रिक्वेस्ट मोड नहीं होता है तो हमें इस जी तरह मोड, जैसे आपने बोला जी आपको ये करना ही है और तय जाना है या कुछ करना है, तो दैट जी। इज फैक्ट। बट ये करना है, दिस इज पार्ट ऑफ माय जॉब, आई कैन से। सो बट इस केस, विकास भाई आपको आमंत्रित करती हूँ टू डू अ डेमो टुडे राइट नाउ विद मी। ओके, मैं विकास बनती हूँ और आप एम्प्लॉय बनी, ठीक है? ओके और द सिचुएशन इज फॉर एवरीबडी टू सी that I am going to be brother Vikas, who's a manager, and I have deadlines, and I have a team with me who need to finish that deadline. Okay, so let's have a conversation. I'm going to speak to you as a heartful communication. I would like to express myself in OFNR. Is everybody ready to listen to this demo? Yeah, do you think it will be a Yes. good role play to see? Okay. Yes. सो दिस इज जो आपकी स्टोरी है ब्रदर विकास, ये हम में से शायद बहुत लोगों की स्टोरी होगी कि हम डेडलाइंस पे काम करते हैं, काम खत्म करके देना पड़ता है, और टीम्स के साथ हमें बातचीत करनी पड़ती है जो उस काम को करने में हेल्प करेगी, राइट? और हम अपने हैबिट के कारण हम डिस्कनेक्टिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, राइट? no, we cannot say we because of our habit, but the situation needs that situation. We are taking decision based on that situation that Okay. comes in front of us. ओके, अगर कोई ठीक है। बंदा काम नहीं कर रहा, he is ignoring that work, then what we should do in that condition? ओके, सो ब्रदर मैं आपसे बात करूंगी जब, तो आप ऐसे बंदे हैं टीम के जो काम को इग्नोर कर रहे हैं, राइट? Yes. आई एम गोइंग टू टॉक टू यू एज विकास। अच्छा, yes, you talk to me. ओके, You are manager, I am worker. Yes. यस, No, ओके। sir. सो गुड इवनिंग विकास, Yes, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? I am fine. Thank you. ओके ओके, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, आपके पास कुछ समय होगा? Yes. ठीक है। आपसे बात करनी थी इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसकी डेडलाइन हमारी कल शाम तक की है। क्या जी। आपसे आपसे पूछना था, ये शायद आपको पता है कि ये Yes. डेडलाइन कल शाम तक की है, जी, मैं जानता और हूँ। हम लोग अभी आधा ही काम कर पाए हैं और हमारे पास आगे काम ज्यादा है, और लग रहा है कि कल शाम तक पूरा करने में हमें शायद आज एक्स्ट्रा काम करना पड़े। तो क्या आपके लिए ये पॉसिबल होगा? क्योंकि ये डेडलाइन आज की है और मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि अगर क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हम सभी के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि क्या आप आज के लिए कुछ ओवर टाइम करने के लिए रुक पाएंगे? जी नहीं, ओके, आज मैं नहीं रुक सकता। ओके, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती आपकी तरफ से, कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बस आज मन नहीं है काम करने का। ठीक है विकास, तो आपका काम क्या मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ, क्योंकि ये डेडलाइन है और मुझे कल खत्म करके देना पड़ेगा। यस, आप कर सकते हैं। Okay, thank you so much. Thank you, Vikas. So I have finished a conversation where I have kept my need and I've kept my deadline, and I'm feeling very worried for this project, and I need to meet the deadline because the client will go out of my hand. Everybody is listening to this, right? So maybe I have a team of say 4 people. One person says he will not do this work.
and I have given him option. I have given him option to express if there is any other problem, share with me. He said there is no problem, I just don't want to do it. So as a manager, I'm giving him a choice that can I give your work to somebody else if you cannot finish it? Because why? Is it sounding difficult for you, or is it sounding that you are taking responsibility of your choice? हाँ, मैं इसका सिचुएशन को क्लियर करता हूँ सिस्टर। होता क्या है कि डिफरेंट माइंडसेट होते हैं और किसी का ना स्किल लेवल कुछ अलग होता है। वो पर्सन उसी काम को कर सकता है जो जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। अब वो बिकॉज ही इज स्किल्ड, हिज बिहेवियर इज एरोगेंट, और वो केयर भी नहीं करता। तो उसे मालूम है मैं किसी और के पास जा भी नहीं सकता। ओके, देन उस कंडीशन में हमें कुछ हार्ड वर्ड यूज, मेरा तो सिचुएशन मुझे 200 पीपल रिपोर्ट करते हैं। तो मुझे उस एक कंडीशन क्वेश्चन है, मुझे इस वक्त आपसे एक क्वेश्चन है, व्हेन यू आर यूजिंग एलियनेटिंग लैंग्वेज या डिस्कनेक्टिंग लैंग्वेज, आपको क्या लगता है योर एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड टू डू द वर्क और ही विल बी मोर demotivated? Just that question. If you are going to give him a choice and give him that importance that विकास, मुझे लगता है कि हमें आपकी जरूरत है, टीम को आपकी जरूरत है, अगर इस वक्त आपका सपोर्ट नहीं मिला तो सभी के लिए मुश्किल होगी। क्या आप अपनी वल्नरेबिलिटी को शो कर पाएंगे कि मुझे इस वक्त आपकी स्किल की जरूरत है? तो आपको क्या लगता है दूसरा व्यक्ति उसको कैसा सुनेगा? आई एम जस्ट ट्राइंग टू make two options. I'm going to talk little rudely that you must finish this work, and second is I'm going to tell him that I really appreciate your skill and I need you right now. Can you please help and give this as a priority? So it is a choice that the manager will make to connect to this person. After all, we are all human beings. Idea is to connect to that person. I don't know how you will use OFNR to show your vulnerability and make him feel that it is important, that your contribution is important to the team. Yes, sister, you're right. I know the skill and the I cannot ignore that person, but the situation that create that moment इज नॉट एवर हैंड। अभी क्या होता है ना, हर एक बंदे का बिहेवियर अलग अलग होता है। हम लोग हर एक बंदे से, अब आप जैसे मेरा जो एक बेसिक लैंग्वेज है, मैं रेस्पेक्टफुली ही सबसे बात करता हूँ, बेसिक लैंग्वेज। लेकिन जहाँ इस तरह का कंपनी का प्रेशर है, सिचुएशन ऐसी है और बंदा सुन भी नहीं रहा, देन वो जो सिचुएशन है ना वो इग्नोर नहीं हो पाती है। थैंक यू विकास भाई, आपकी प्रॉब्लम रखने के लिए। मैं किसी को इनवाइट करूंगी, अगर आप इस विकास भाई की प्रॉब्लम के लिए कुछ बोलना चाहें। अपराजिता, क्या आप कुछ बोलना चाहती हैं रिलेटेड टू दिस? थैंक यू सो मच। Yes. तो बोलना चाह रही थी, एज हमने अभी उनकी बात सुनी, सो रियल लाइफ सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर। Yes. So sometimes putting your vulnerability in front of that person, sometimes that also doesn't work. So maybe if we can say like so I request you to ask one of your colleagues to share your work, or would you be able to explain your work to some of your colleagues so that we can finish it in time, or something like that. As a company policy, I would like to inform you that your name would not be there in the credit list of this project. It's not punishment, but it's a statement of fact, something like that. But I know the real situation is really complex because we are working in a team and there are lots of other things also. So since we are using heartful communication, my expressing my own feeling and need somewhere, I think, will be able to connect to the other. If that person is able to think of himself in your place, there can be a change. So right now, we are talking on principles of heartful communication, and this is a situation where we can try using OFNR
and especially connecting with our own self first, centering your own self, because इस समय मैं खुद परेशान हूँ, तो जब मैं परेशान हूँ तो मैं HC में बात नहीं कर सकती. जब मैं खुद परेशान हूँ, I cannot talk HC. I cannot do OFNR when I am irritated and I am troubled. So the number one step is to go towards your own connection. Center yourself. Think of, if I talk like this, what will happen? And if I talk like this, what can happen? So first we center ourselves, give us 5 minutes, and then have a conversation. It might help in that situation. Because अभी इस वक्त हम solution mode पे जाएंगे तो शायद session हाँ, सिस्टर मैं वही कहना चाहता हूँ जब Yes. सभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पीएचडी का प्रॉब्लम यहाँ नहीं लें. हम यहाँ अभी हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं हार्टफुल कम्युनिकेशन में, तो हमें अभी प्रिंसिपल समझने की जरूरत है. और सिस्टर ने डेमोन्स्ट्रेट किया है that it can start making a difference over time, and we have to solve our own situations. These are the tools. So Yes. that is all we can do. Only right thing now. is, it can be a baby step in the direction of meeting your need. If it is an intense problem, वो एक बार में solve नहीं होगी. But एक baby step उस direction में हम जरूर ले सकते हैं. Can in that direction that something changes between you and that person. If your intention is to connect, something will change. I think that is what I want to leave Vikas brother with, and Okay. I hope something will shift a little bit. It is big problems will take little time and a consistent effort with your intention to connect. Yes, true. Thank you. you. Thank you. So I see. Sister. Sister, one thing Brother I SP may Singh, wanted to some clarification just in my mind. Can we give in 1 minute point? Can you please wait, Brother SP Singh? I'll take one more person before you. Dr. Kuldeep Chauhan. यस सिस्टर, मैं थोड़ा कहना चाहूंगा. मैं चूंकि हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ अपने यहाँ, और मैं गाँव को देखता हूँ जो महिलाएं हैं मैक्सिमम. तो कई बार जैसे कोई वो होती है, कोई मीटिंग या कोई रैली वगैरह निकलती है, शासन की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट में आता है, आपको आना है वरना आपका मानदेय काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा. तब नहीं आती है, कुछ कर नहीं सकते. तो अक्सर क्या सीएमओ मुझसे बोलता है कि आप बुलाओ, आपकी आशा है. तो मैं बड़े प्रेम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएंगे, मुलाकात होगी और भी कुछ बात हो सकती है. आएंगे तो अच्छा लगेगा. जो भी आ सकता है, समर्थ है, आ जाए. जो नहीं आ सकता है, बीमार है, तो नहीं, तो उनकी संख्या होती है. तो आज ये ट्रेंड हो गया कि जब भी कोई ऐसा ऑकेशन होता है तो कहते हैं भाई ये चौहान से बोलो, ये बुला लेगा, इसके कहने से आ जाएंगे. तो डैश इम्पैक्ट. So thank you, Dr. Kuldeep. I think Brother Vikas ने ये समझ लिया होगा जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, कि जब हम फोर्स करते हैं तो हम जो दूरी है उसको बढ़ाते हैं, वो कम नहीं होती. पर जब हम उनको चॉइस देते हैं या ऑप्शन देते हैं तो दूरी कम होती है. यहाँ पर बहुत सारे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्सेस हैं, जिसमें एक रिस्पॉन्स दूसरे व्यक्ति के फीलिंग्स और नीड्स को अगर आप पहचान पाए, उससे जुड़ पाए, तो भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बन ही जाएगा. So thank you for that, Brother Vinod. That person's feelings and needs, that means empathy. We are trying to empathize and go into that person's zone for some time. And जब ऐसा conflict होता है तो हम अपनी insistence को छोड़ देते हैं. We leave our insistence and the outcome that we want. If there is a conflict, it is always better to leave the insistence of what you want if you want to move ahead. So that is the energy of, OFNR. If you are speaking OFNR, we need to be open to listen to the other person's feelings and needs. Thank you. Brother Jay Prakash Thakur, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
नमस्कार सभी को। या सिस्टर, हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ सिस्टर, जैसे कंपनी में काम करते हैं तो ऐसी सिचुएशंस आते हैं, तो मैं एक बार उनके चेहरे को देखता हूँ, फिर उनसे कनेक्ट होकर बात करता हूँ। तो उनका जी शुरू-शुरू में तो एग्रेसिव मूड रहता है, तो जी थोड़ा वो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट उनके चेहरे की तरफ देख रहा होता हूँ और जी बोलता हूँ बैठिए, बात करनी है। फिर थोड़ा बैठने के बाद उनको 10 मिनट टाइम देता हूँ। 10 मिनट उनको बैठने के लिए, सोचने के लिए टाइम देता हूँ। फिर वो सोचते रहते हैं क्या बात करेंगे। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि इस तरह का काम है, आप बताइए कैसे होगा? जी जैसे हमको परसों देना है जॉब को, जी तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ। मैं अपना ओपिनियन नहीं देता हूँ कि आप इतना जल्दी कीजिए। तो वो खुद बताना शुरू करते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो हमको और आदमी लगाना पड़ेगा ऐसा। तो मैं कहा मैं आपको कैसे क्या हेल्प करूँ? तो मैं खुद उनको सपोर्ट करता हूँ और 1-2 लोग और दे देते हैं, तो उस काम को आसानी से टैकल कर देते हैं, क्योंकि पहले तो आते हैं, तो वो बैठना भी नहीं चाहते हैं और बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो जब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सिट, उसके बाद उनको थोड़ा देर पॉज़ दे देते हैं, थैंक यू तो प्रकाश उसमें भाई। हमारा काम। थैंक यू जयप्रकाश भाई। आई हमको आपकी बात का सार समझ में आया कि आप उनको चॉइस देते हैं, उन्हीं से सोल्यूशन निकलवाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुनते हैं और कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशन आता है। सो थैंक यू जी। सो मच फॉर दैट शेयरिंग। मैं इसके बाद एक प्रिंसिपल ऑफ हार्टफुल कम्युनिकेशन शेयर करना चाहती हूँ कि when we are trying to understand needs, जब कोई बहुत गुस्से में बात करे आपसे, कोई क्रिटिसिज्म आपको दे, कोई जजमेंट्स आपकी तरफ फेंके, क्या हमारी अवेयरनेस बदल रही है कि हम इनको नीड्स, इनके पीछे की नीड्स को देख पाए? आर वी ट्राइंग टू सी नीड्स बिहाइंड the spoken words, behind the judgments, behind the anger, behind the criticism? Because जैसे मार्शल रोजनबर्ग कहते हैं, behind every criticism, anger, it is a tragic expression of an unmet need. So ये मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी व्यक्ति को गुस्से में देखें, तो उसी वक्त अपने आप को याद दिलाएं कि इसके पीछे कुछ हो रहा है, उसके गुस्से के वर्ड्स के पीछे कोई अनफुलफिल्ड या अनमेट नीड है, विच यू आर ट्राइंग टू गेस इन। जब आपका नजरिया ये हो जाएगा तो शायद आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने वाला है। ब्रदर आशीष लिखते हैं, पहले कनेक्ट करें फिर करेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर दैट प्रिंसिपल ऑफ HC। द प्रिंसिपल ऑफ HC इज कनेक्ट एंड नॉट करेक्ट। सो जब मेरी एनर्जी कनेक्शन की होगी तो मैं ऑटोमेटिकली उनके दूसरों की फीलिंग्स एंड नीड्स को भी देख पाऊंगा। और यदि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा, इट इज अ स्ट्रैटेजी, दैट पर्सन इज फुलफिलिंग सम नीड। अगर वो काम नहीं कर रहा तो वो किसी और चीज को कर रहा है विच इज इंपॉर्टेंट टू हिम। ऑल ह्यूमन एक्शंस आर एन अटेम्प्ट टू मीट नीड्स। क्या आपको ये याद है प्रिंसिपल? जो भी हम कहते हैं या जो भी हम करते हैं, हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं। एंड दीज नीड्स आर ऑल पॉजिटिव, यूनिवर्सल, and they are a point of connection to us. They are common to us. They are universal. They are life motivating forces because of which we are doing something or saying something. आज हम लोग सब इसी मीटिंग में हैं। मुझे श्योरली ये लगता है कि बहुत लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि हम ठीक से आज की लर्निंग जितना करना चाहते थे नहीं कर पाए। मुझे वो एनर्जी फील हो रही है मेरे हार्ट में। इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा नंबर ज्यादा है, हमारी भाषा में भी हमारा टाइम ज्यादा जा रहा है। So there are people who are only speaking English, there are people only speaking Hindi.
So I am feeling confused right now. My need is not fulfilled to right now reach to you as I would have loved to. So I'm expressing it to you and I'm sure कि आपको मेरी नीड समझ में आ रही है. जितना इफेक्टिव हम ये सेशन कर सकते थे, थोड़ी उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी, क्योंकि कुछ दिलों में ऐसा रहेगा कि ये मुझे समझ में नहीं आया. राइट? सिस्टर अर्चना, मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा. विनोद अग्रहन बोल रहे हैं, सिस्टर वी आर जरूर. एंजॉयिंग द सेशन, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, प्लीज कैरी ऑन. Oh, thank you so much. That is motivating for me to hear. Thank you, brother. I want to see Brother Murlidhar with a hand raised. You want to say something? Yes, sister. बोलिए. Am I audible, sister? Yes, very much. Yes, sister. So, as Brother Vikas expressed his concerns, Yes. okay, I have a suggestion. So, Okay, since 1 minute, Brother Murlidhar. yes, Will you like to, for the learning of everybody today, will you like to use HC principles and not solution directly? Will you like to use HC principles? So it is for everybody's learning. It is like we are trying to learn some new language and not copy something that you will say. We will not like to hear the solution directly. yeah. Will you like to break it up into HC principles that you're using to come to a solution? HC principles, yes, sister. Wonderful. Yes. I am a boss now. Okay, you are the boss now. Fine. I have crossed that person's stage. You have My already subordinate- crossed that person's stage as a Yeah. team member. Yeah, I have Okay, elevated so to boss. from a team member, you have become a boss. Boss. Okay. So that person is arrogant and he is not ready to cooperate. Yes. Yes. Now I Okay, am not this- going to take any revengeful action. Okay. Then let me step into his shoes. Okay. Let me complete the task, since that task has to be completed. And if you don't have a skill set, because that is the problem Vikas Bhai is sharing. No, That- skill set means I have crossed his stage. That means I am already skilled. Okay. Okay, you're already skilled to do the job. Okay. Yes. Let me Okay. complete that. Okay. Okay, let me complete that work without having any revengeful action or revengeful thoughts in me, Okay. which suits the HC communication. Okay. So what I'm hearing is that brother is saying he is not going to harbor a feeling of unhappiness or revenge. He will like to offer completing that task himself, because he's also as skilled as that person is. After Right? that, automatically, yes, after that, automatically that person will get corrected, because my work will go from my hand, because everybody is fearing about his bread and butter. Okay. So the need for contribution to the team can motivate him to work. Yeah. And also the need for keeping the job can Yes. motivate him to work. Yes. All right. So we are trying to split things into needs, feelings, and actions, right? Yes. So if that person feels that I am valued and let me contribute so that everybody benefits as a team, it can be a motivator to that person to work. Yes? Yes. Thank you so much. So there can be different ways and strategies we can use HC to motivate our team members to cooperate and, contribute. Let me remind all of you that the need for human contribution is very high in all of us. The need for appreciation is very high in most of us who are working. We need that your work is applauded, right? We all love it. So if that can be a motivator to our team members, it can work. Thank you so much. Brother Vikas, आपका हाथ खड़ा है. One last thing I want to hear from you, because everybody is trying to put their inputs for your, situation.
So, thank you all for understanding my situation, and this is one of the situation. But this is not happening every time. ये क्या Okay. होता है कि कभी कभी स्पेसिफिक, एंड जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है और उस समय मुझे भी मालूम होता है कि जो उस समय मेरा बिहेवियर है वो जी। ऐसी नहीं है, हाँ। क्योंकि वो देखिए हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं और हम लोग, मुझे मालूम है किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो, जैसे मास्टर ने कहा है ना, सिचुएशन होती है। एक मास्टर ने एग्जांपल भी दिया है, अगर कोई किसी का शू है और बच्चा उस पे कीचड़ डालता जा रहा है तो आप क्या करेंगे? You will कुछ protect, तो I एक्शन will लेंगे। protect myself. या तो दैट इज द डिमांड एट दैट टाइम, लेकिन उसके बाद हमें So क्लीनिंग भी करना है। I will break you here, brother. I will protect myself if somebody is putting kichad on me. I will protect हम्म। myself if somebody is throwing something at me. Right? या The way I do it can be different. या My strategy to meet my need can be different in different situations. And in HC awareness, that is what Lalaji's principles of conversations and AEIOU can help us. What is the strategy I will choose to meet my need? For sure, I have to protect myself. Self-protection is the highest need. Now, what action I will take depends on me, depends on that time, how my frame of mind is. Right? So, यस I think हमने आज जो कवर किया वो था OFNR. हमने कवर किया कि इंटेंशन ऑफ HC इज टू स्टे इन कनेक्शन एंड नॉट करेक्शन. हमने ये भी कवर किया कि सेल्फ एम्पैथी, दैट मीन्स अपने आप से जुड़ना, बहुत ही वैल्यूएबल है अगर आपको HC प्रैक्टिस करना है. अपने आप को सेंटर करना, थोड़ा बैलेंस करना, जब आप बहुत ट्रिगर्ड हो, गुस्से में हो, उस वक्त अपने आप को पहले सेंटर करें, तभी किसी से बातचीत करें, क्योंकि वो दैट इज वन ऑफ द की थिंग्स दैट विल हेल्प यू. उसके बाद हमने ये भी देखा आज कि सर्किट ब्रेकर्स क्या हैं और कैसे हम उनका जब प्रयोग करते हैं तो हमारा दूसरे के साथ कनेक्शन टूट सकता है और हमारा फोकस स्पीकर से लिसनर पे आ जाता है. जब आप अपनी बात कहने लगते हैं, जब आप बीच में फोन देखने लगते हैं, या आप किसी कोई फीलिंग्स को रिजेक्ट कर देते हैं, या आप प्रॉब्लम को बोलते हैं कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ ही होता है, जनरलाइज करते हैं. तो बेसिकली जब हम इस तरह की बिहेवियर लिसनिंग के टाइम करते हैं तो हमारा कनेक्शन ब्रेक होता है. हमने आज डिसकनेक्टिंग लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ी चर्चा की कि जब हम यू शुड डू दिस, यू मस्ट डू दिस कहते हैं तो उसकी एनर्जी दूसरे के ऊपर कैसा उसको प्रभाव डालती है. हाउ डज इट लैंड ऑन द अदर पर्सन व्हेन आई से यू मस्ट डू दिस, instead of giving him a choice, will you like to do this? हम same चीज, we can speak the same things in two different ways, and the HC way is to give a choice. The need for choice is paramount in all human beings. आप अपने ऊपर इस्तेमाल कीजिए कि अगर आपके घर वाले आपसे बात करें और आपको एक चॉइस दे के बात करें तो आपको कैसा फील होता है, और अगर आपसे डिमांड करें तो आपको कैसा फील होता है. अगर उसका आंसर आपके पास है तो यू बिहेव द सेम वे विद अदर पीपल. दिस इज, ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कॉन्शियसनेस में. और हमने लास्टली लालाजी महाराज के एक प्रिंसिपल है LPOC में हमने पढ़ा कि आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो कभी भी किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी के दिल पे एक भारीपन क्रिएट ना करें और हमारे दिल पे भी भारीपन क्रिएट ना करें. सो द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज समथिंग वी कैन टेक केयर ऑफ. अगर मैं आपसे इस समय बोलूं, आंख बंद करके महसूस कीजिए, हाउ डू यू फील व्हेन आई से द वर्ड पीस, शांति?
How do you feel if I say stupid, मूर्ख? तो शब्दों में भी बहुत एनर्जी है, चाहे आपकी इंटेंशन अच्छी हो और अगर शब्द गड़बड़ हो तो भी हमारी इफेक्टिवनेस एचसी की चली जाएगी. सो आई थिंक 8:30 बज चुके हैं, हम 5 मिनट ऊपर हो गए. वी विल लाइक टू रिस्पेक्ट एवरीबडीज टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. I really hope that there is some little takeaway for everybody, all of us 178 people who are here today. Any small thing also, if it has made a difference to you, we feel it was a fruitful meeting. तो अर्चना जी, मैं कहना चाहूँगा, this was a wonderful session and I am very sure many people, at least as you said, got the fresh awareness of benefits of heartful communication and how we can orient ourselves. तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And I would like to say for all the people, we'll try to keep 2 separate sessions, one for Hindi completely and one for English completely. अच्छा रहेगा. I think sister will like to invite you for 2 separate sessions next time. Hope you Sure. can make some time, because Sure. people are just loving the way you are interacting. I would And love we to. will like to keep on going on and on. It will never end. So here we'll like to put a stop. हम यहीं रुकते हैं और अगला सेशन जब 7-8 वीक्स के बाद होगा तो हम 2 सेशंस करेंगे अलग से हिंदी के लिए एंड मैं फॉर कुछ इंग्लिश. बोलना चाहती हूँ प्रेम भाई. हाँ, जाते बोलिए. जाते एक छोटा सा होमवर्क देना चाहती हूँ सभी के लिए. A small homework for all my dear brothers and sisters and all my giraffes here. The homework is, when you hear criticism, when you hear judgments, when you hear anger, just take a pause and convert that into the need of the other person. What is going on behind this judgment? Because which has a hidden need behind it. अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही हूँ, कुछ ना कुछ मेरे अंदर अनफुलफिल्ड या अनमेट है. अगर मैं मैनेजर हूँ और मैं बहुत गुस्से में हूँ तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट नीड अनफुलफिल्ड है. और एज अ टीम मेंबर अगर मैं अपने मैनेजर की उस नीड को समझ पाई तो मेरा उस मैनेजर के साथ कनेक्शन हो जाएगा. I think I will invite you to practice this in your circle of connections. When you hear judgments, criticism, and anger, take a pause and remind yourself to convert them into needs of the other person. That's all. Spot the need. Do you think it will be funny and it will be fun? Yeah? Kuch hands up, kuch thumbs up. And in your relationships. Thank you so much. Thank you, Archana ji. Thank you so much. And thanks all of you for joining today. Good night. Good night. Thank you, sister. Thank you. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you, sister. सभी को प्रणाम. Good night. Good night. Prem bhai, Thank you. I can stay on for Thank you, 5-10 sister. minutes more. If anybody has pressing questions, I saw some raised hands. Okay, sure. Yeah. So please continue. I will keep myself on mute. Yeah. And after some time, after 10 minutes, I will close the meeting. Yes, please. So anybody who wants to leave are free to leave. And anybody who has any questions, I'm here for 10 more minutes. Yeah, Atul Modi here. Yes, brother Atul. My question was basically for brother Vivek. His scenario was very, very practical in any office.
I wanted to ask him कि by not following the heartful communication, by following the Jekyll language, was he able to get the work done, or that was also a failure? And Yeah. was it once or twice, or every month that target, when target is received, was he able to get the work done by using Jekyll language, or was it the same? Means I just, because this is a very, very practical question or very, very practical problem which he has actually put forward to us, and there will be a learning for everybody in this. So I don't know where Brother Vikas is here. I don't see him here. And Brother Atul, it is a fantastic question which was also in my mind. So since Brother Vikas is not here, what I can perceive from his sharing was, even if you are able to insist upon somebody doing something, it can work once or it can work twice. It will not work more than that. Yeah. Either you will lose the employee, yes, or you will have a different team. Yeah. So in practical scenarios, all these things are possible. But I also wanted to means आपका भी जो था कि वो Jekyll language use नहीं करना है, but उससे भी कई बार मतलब then that means कि even if you understand other person's need, are you obliged to fulfill all his or her needs in a real world? Lovely question. Thank you, Brother Atul. This is learning happening now. So what I'm understanding is, first is, when we are connecting to the other person's need, we are not saying fulfill it. We are connecting to it. We are connecting to the feeling. That means I'm interested to understand. That is my energy. I'm not saying I'm going to fulfill your need. Okay? Yeah. Okay. And when I'm in the area of wanting to understand, there is a connection made already. Because the other person, if it's a sincere willingness to understand, there is a connection made. After that, you express your need and feeling. And gently make a request in the direction of meeting your need. Okay. And the intensity of the problem will depend on how many interactions it will take. It is not necessary that everything will happen in one go. It will happen a small step in that direction, brother. Okay. Thank you. I'm very happy for that learning. Thank you. I would like to repeat Brother Apte's comment that ऐसा लगता है आपको सुनते ही जाए. I will like to attend both English and Hindi sessions whenever it is happening next time. You're most welcome. So, Thank Brother you, sir. Rakesh Joshi, you're welcome. If you can put your video on. I can see your hand raised. Namaste, sister. Namaste. आपने सारा लगभग क्लैरिफाई कर दिया है. मेरा क्वेश्चन चल रहा था दिमाग में. Can you hear me? In some breaks, I can hear you. There's some break. Yeah, you can clarify all the doubts. I already since long I am raising my hand. Okay. Since so long I am raising my hand. Do you want to ask something now? No. I just thanks to you that you have clarified all the doubts. Thank you, brother. I feel happy to hear that. Yeah. Brother Vikas is in my group, COC group. Okay, we already so that will be. this. Please share this with him. What we just spoke. Yeah, definitely. I will do this. So sister, I hear. Sorry, Brother sister. Ganesh. I'd like to add that Brother Vikas said that this doesn't happen often.
I mean, it's only rare because that was one question by the earlier participant. Thank you. Okay. Thank you. So मुझे लग रहा है कि अब किसी के पास questions नहीं है. Sister Anne, how are you doing? Sister Anne Sheeran. Hello, hello. I'm doing very Hello. well. I really enjoyed the session. Thank you. Yeah. That makes me so happy because it was mostly in Hindi and I was wondering what you would be doing today. And did you get some takeaways? I did. I've written quite a bit here. I just find every time I hear, it's a lot of it is the same, but it just goes more deeply into me. And that's So very beautiful. helpful. Yeah. So beautiful. I really celebrate that. The Thank you. learnings are same. Nevertheless, it deepens each time you hear them with the context and with a story and with an example. So thank you, Sister Anne. So happy to hear that you have takeaways for today's session. Thank you so much, sister. Difficult to conduct here. So there are 3 more hands and all have already spoken before. So should I go ahead with them if you don't have anybody else new? I heard Brother Ram, I heard Brother Jayaprakash, I heard Brother Rakesh. Okay, so go ahead, Brother Ram. Namaste. Namaste. I would like to share one experience I had after learning this nonviolent communication. Because somebody was referring, in the outside world, it is very harsh and it is very difficult to follow. Let me tell you, I was driving at the back of my car when I was crossing over a speed break. Somebody has made a dash at the back. Immediately I got down and saw it is a young boy, aged around 17. And his nose was, because he was wearing a helmet, he dashed at the back of my car. And when I helped him out to get up, then I saw that his nose is bleeding. Then immediately I gave him water to wash. Then after that, what happened? He said, I asked him, what is your age? He said 17. Then you will not be having license. Yes, uncle. Sorry, uncle. I just fight with my mom and took her bike and came. Now it has happened like this. I'm very sorry, he said. Then immediately I remembered of this, applying the OFNR. Then I observed his feeling is that he is feeling very sorry because he has taken his vehicle and come out against her mother's instructions. That is one. So he is feeling very guilty at the same time and he is asking sorry. Second thing, then he said, then I said, okay, you just give me your address, I'll come and talk to your parents. He said, no. Actually, Easter is coming and my exams are going on, final exams till the April 4th. If I do this, even my parents will not allow me to even write this exam. My future will get spoiled. Then I observed his needs. His future will not get spoiled. That is his need. So I said, okay, I'll take your number and address. You first finish your Easter function. Then after that, you till 4th, I'll not bother about you for anything. I'll take your address and number. And he has given his address and number. Then I said, after 4th, we will see. First, you finish your exam. This is the experience I had after applying this OF in my practical. So wonderful to hear and very, it's a mode of celebration for all of us that you remembered to get into his shoes and empathize with the boy. So congratulations. If we are able to, if we decide that we should, not in normal situation, especially when the boggling situation comes, we should think of applying it. That is what I have done. And it has got a wonderful result. That boy has rang up after 1 week. He said, uncle, how are you? I'm sorry, I'm in my exams. Otherwise, I would have called you before. Anyway, anytime you just go to the insurance office, if there is anything to be paid extra, I'll give. I said,
from where you will pay because you are not earning. No, I'll ask my friends, they will give you. I said, So you don't bother about you made a connection and you built a human bond, and that is treasure. To build human bonds is a biggest treasure, I feel. So congratulations, brother. Thank you. Yes, brother Jayaprakash, this will be the last. I think Prem Bhai can close the meeting at any time. नमस्कार सभी को. I'm sorry, Sister Rashi. This will be the last question. You just came in a little late. Yes, brother Jayaprakash. सिस्टर, हमारा जो अभी प्रोग्राम चल रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में बहुत इंटरेक्टिव है. मतलब कुछ चीजें हिंदी में नहीं समझ पाती तो इंग्लिश में आ जाती है, इंग्लिश वाला कुछ नहीं तो हिंदी में आ जाता है, तो दोनों में आता है तो ज्यादा अच्छा लगता है. और दूसरा ये था कि जैसे हम किसी चीज को टैकल करते हैं तो जैसे लाला जी का कुछ सुझाव है ना, वो सूक्ष्म सुझाव, जैसे कि सभी लोगों में सही सोच सही समझ विकसित हो रहा है. तो दूसरा ये देते कि हमारे आसपास की हर चीज ईश्वरीय याद में डूब रही, तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसमें कुछ चेंजेज आता है. इट टेक्स 2 to 3 मिनट्स और उनका जो मूड रहता है वो ट्यून होने लगता है. ये हमको बहुत इफेक्टिव लगा. सो वी कैन डू Thank you, दिस brother. आल्सो. So thank you, brother, for sharing Lalaji's techniques and the subtle suggestions Lalaji has given us. What I want to share before I leave is, when you are thinking with an intention of having a positive thought and connection, your mind will not have a negative thought at the same time. Your mind cannot channelize two tracks. पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी साथ साथ नहीं सोच सकते, एक ही डायरेक्शन में जाएगा. अगर पॉजिटिव सोचना चालू किया, ऑटोमेटिकली नेगेटिव नीचे हो जाता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. सो द पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स is automatically shedding the negative thoughts from you. I think I heard this from one of the scientist who is into research of, brain, etc., who came to Kana, and he was saying that you cannot have two tracks at the same time. And that is wonderful, right? So automatically your positivity will shed out your negativity. I think that is wonderful to practice. So thank you so much. This was very enriching, and it was a big group of 178 people. It is very, very encouraging that everybody wants to practice it and make a difference. Good night to all of you. Good night. Thank you so much, sister. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you, sister. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sister.